हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 MCQs that will be covering the entire syllabus. That means the 10 units for UGC NET Commerce syllabus. 5 questions from every unit I have taken. Try to guess the answer before I tell you the answer. Note down how many you get correct and tell me your scores in the comment section. So let's start the video. Let's start the quiz with Unit 1, that is Business Environment. The headquarters of WTO is located at, very important question repeated many times in UGC NET Commerce Paper. So do prepare such questions very nicely. Options यहाँ पर हैं Washington DC, Geneva, Paris और New York. Correct answer is option B, that is Geneva, and WTO was established in the year, I hope you all know, 1995, and it replaced GATT. So WTO ने GATT को replace किया था in the year 1995 when it established, and headquarters Geneva. SEZs, that is Special Economic Zones in India, are primarily meant to, options हैं imports, exports, agriculture और domestic consumption. So correct answer is option B, which is exports. Special economic zones basically encourage export-led growth by providing incentives and tax benefits. TRIMS agreement of WTO deals with, options are trade in services, investment measures, agriculture trade or intellectual property. Correct answer is option B, which is investment measures. Next question, fiscal deficit occurs when, options हमारे पास हैं expenditure is more than revenue, revenue is more than expenditure, imports are more than exports or exports are more than imports. So fiscal deficit होता है basically option A, when expenditure is more than revenue. The Green Revolution in India is associated with, options are industrial reforms, agricultural productivity, foreign trade or privatization. Correct answer is option B, that is agricultural productivity. So Green Revolution of 1960s basically introduced HYV, that is high yield variety seeds, fertilizers and irrigation boosting food grain output. Next we have Unit 2, which is Accounting and Auditing. Unit 2 से पहला क्वेश्चन हमारे पास है Accounting Standard 3 relates to, options cash flow statement, depreciation, valuation of inventory और amalgamation. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील्स विद classification of cash flows into operating, investing and financing activities. So correct answer है option A, that is cash flow statement. Next question, audit that ensures detection and prevention of frauds is called, options cost audit, internal audit, forensic audit or management audit. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फोरेंसिक ऑडिट. फोरेंसिक ऑडिट बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स यूजिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स. एन एरर ऑफ प्रिंसिपल अफेक्ट्स, ऑप्शंस आर ट्रायल बैलेंस अग्रीमेंट, ओनली वन अकाउंट, डबल एंट्री सिस्टम और नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो उससे क्या होता है, उससे ना ही आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा, ना ही कोई एक अकाउंट इंपैक्ट होता है और ना ही डबल एंट्री सिस्टम अफेक्ट होता है. सो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर हियर. Continuous audit is most suitable for, options जो हमें given है यहाँ पर, they are small firms, banks and large organizations, sole traders और partnership firms. Correct answer है option B, that is banks and large organizations, because यहाँ पर the number of transactions is very large. So that means अगर हम continuous audit करेंगे, so उससे क्या होगा, frequent checking of accounts होगा. So it is most suitable for banks and large organizations. In double entry system, every debit has a, options are liability, income, corresponding credit or expense. Correct answer होगा option C, because in double entry system every debit has a corresponding credit. अगर आपने 10,000 रुपए का डेबिट किया है, सो आपको 10,000 रुपए का क्रेडिट भी करना होगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डबल एंट्री सिस्टम. सो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है. हो सकता है आपका क्रेडिट में 2 अकाउंट्स आप यूज करें, 5-5 हजार दोनों में आप क्रेडिट करें, बट द टोटल शुड बी सेम फॉर डेबिट एंड क्रेडिट.
Let's proceed with questions from Unit 3, that is Business Economics. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स. ऑप्शंस हैं प्राइस एंड डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, नो रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन price increases, demand falls, and when price decreases, demand will increase. Other things remaining constant. So the correct answer is option B, that is price and demand are inversely related. In perfect competition, the demand curve of a firm is, options are downward sloping, upward sloping, horizontal or vertical. So perfect competition के case में the demand curve of a firm will be ऑप्शन सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में अ फर्म इज अ प्राइस टेकर और यहाँ पर जो डिमांड होती है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, हेंस द डिमांड कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, ऑप्शंस हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिटी. करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज नेगेटिव. और ऐसा क्यों है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. So let's take the example of car and petrol, जो कि दोनों complementary goods हैं. So car and petrol के केस में क्या होगा, if price of petrol will increase, अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होता है, what will happen to demand of car that is consuming petrol, it will decline. और वहीं पर अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाते हैं, so the demand for car will increase. That means both the variables are flowing in opposite direction. और जब भी ऐसा होता है, we say the shape of demand curve is negative. The kinked demand curve model is associated with, options are monopoly, oligopoly, monopolistic competition or perfect competition. Correct answer है option B, that is oligopoly. In oligopoly, the kinked demand curve explains rigidity, that is price rigidity in oligopoly markets. Law of variable proportions applies in, options are short run, long run, both or none. Correct answer option A, that is short run, because हम assume करते हैं in law of variable proportions that some factors are fixed. और वो कब होता है, in the short run, because long run में all the factors of production are variable. So law of variable proportions is applied in short run. Let's move forward with unit 4, that is business finance. Cost of preference shares is calculated using, options are dividend by net proceeds, interest by net proceeds, earning per share by price or none. So formula for cost of preference shares is dividend by net proceeds. So ये आपको डेसिमल फॉर्म में आंसर देता है. अगर इसी को परसेंटेज फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, सो इनटू 100 हम लोग कर लेते हैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स. Pecking theory indicates, options are firms prefer equity first, firms prefer debt first, firms prefer retained earnings first or none of the above. Correct answer है option C, that is firms prefer retained earning first, because as per Pecking theory सबसे पहले firms will want to have the funds through retained earnings और उसके बाद still if they have the requirement debt and lastly they will be using equity. So order क्या रहता है as per Pecking theory? Number 1 retained earnings, then debt and lastly equity. So correct answer here is option C, that is firms prefer retained earnings first. Gross working capital is, options are current assets minus current liabilities, equal to current assets, equal to current liabilities or current assets plus fixed assets. So gross working capital is equal to current assets, मतलब कि जितने current assets फर्म के पास है, कंपनी के पास है, दैट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. जनरली हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर वर्क कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, विच इज बेसिकली नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल. सो नेट वर्किंग कैपिटल अगर आपसे पूछा जाता है देन द फॉर्मूला इज, जो हम हमेशा यूज करते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. बट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स द फर्म इज हैविंग. Dividend irrelevance theory is given by, options are Walter, Gordon, MM or Keynes. MM here stands for Modigliani and Miller, and that is the correct answer also, because MM theory without taxes is
डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कंपनी कुछ भी डिविडेंड पे करे, इट विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जबकि वॉल्टर एंड गॉर्डन हैव गिवन अस रेलेवेंस थियरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कि depending on the dividend that the company is giving to the shareholders will impact the market value of the firm. So ये दोनों हमारे पास relevance theories हैं. MM approach without taxes is your irrelevance theory, and Keynes has not given us any theory for dividends. CAPM is used for calculating. Options are cost of debt, cost of equity, weighted average cost of capital, or retained earnings. Correct answer option B, that is cost of equity. CAPM model हम use करते हैं to calculate the cost of equity. Now we will be discussing some questions from Unit 5, that is business statistics and research methods. First of all, standard deviation is a measure of, options हमें यहाँ पर given है, central tendency, correlation, dispersion और skewness. Correct answer है option C, that is dispersion, because it measures variability of data around the mean. अगला question, null hypothesis is rejected when, options are p value is greater than 0.05, p value is less than significance level, test statistic is less than the critical value, or none of the above. Correct answer यहाँ पर है option B, that is p value is less than the significance level, because lower p value here means strong evidence against null. So null hypothesis is rejected when p value is less than the significance level. Which sampling method is based on equal chance of selection? मतलब इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड ऐसा है जिसमें हर यूनिट के पास इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैंपल? ऑप्शंस हमारे पास हैं जजमेंटल सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग. chi-square टेस्ट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शंस हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स, association of attributes, variance equality or regression analysis. Correct answer is option B, that is association of attributes. If correlation coefficient is equal to 0, it means options are perfect positive relation, option B perfect negative relation, option C no linear relation, or option D cause effect relation. Correct answer यहाँ पर है option C, that is no linear relation. So that means when the value of R is equal to 0, we can say that there is no linear relationship between the variables. Now we will be discussing some questions from Unit 6, that is marketing management. 4 P's of marketing are given by, options हैं Drucker, Kotler, McCarthy और Maslow. Correct answer option C, that is McCarthy. McCarthy has given us 4 P's of marketing, which are product, price, place and promotion. इसके बाद we have added some new P's also to the existing, to the traditional 4 P's. What are they? Tell me in the comment section. The strategy of setting low price to enter market quickly is, options are price skimming, penetration, premium pricing और none. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग. सो इसमें क्या किया जाता है, जब भी मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है उसका प्राइस बहुत ही कम रखा जाता है. व्हाई इज दैट डन? सो दैट वी कैन अट्रैक्ट दी कंज्यूमर. फटाफट आप मार्केट में घुसना चाहते हैं, फटाफट आप मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं, उसके लिए द प्राइसेस आर फिक्स्ड वेरी लो इन द स्टार्टिंग ऑफ द PLC. Which stage of PLC, that is product life cycle, requires heavy advertising to create demand? Options हैं introduction, growth, maturity और decline. So correct answer है option A, that is introduction, because introduction stage में आपका जो product है that is new, और हो सकता है आपकी पूरी company ही नई है. So सबसे पहले we need to create awareness about our existence in the market to the consumers. उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए the money is spent on heavy advertising so that we can create awareness about our existence in the market and customers get to know about us. So introduction stage में there is a requirement of heavy advertising to create demand. Brand equity means, options हैं equity shares of brand, value added to product due to brand name, trademark registration और none. Correct answer है option B, that is value added to product due to brand name. Market segmentation is done on the basis of, options are homogeneity within group, heterogeneity between groups, both or none of the above.
सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ, बिकॉज जब भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है वी क्रिएट डिफरेंट सेगमेंट्स इन दी मार्केट. फॉर एग्जाम्पल हमने सेगमेंटेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट. दिस इज फॉर मेल, एक सेगमेंट हमने बना लिया, एंड सेकेंड सेगमेंट वी हैव मेड फॉर फीमेल, राइट. सो अगर हम बात करते हैं विद इन द ग्रुप, सो विद इन द ग्रुप क्या है, होमोजेनिटी है. यहां पर जो सारे यूनिट्स हैं दे आर मेल, सो अंदर से तो वी हैव होमोजेनिटी बट हेट्रोजेनिटी बिटवीन दी ग्रुप्स. दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से अलग हैं. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज होमोजेनिटी विद इन द ग्रुप एंड हेट्रोजेनिटी बिटवीन द ग्रुप्स. Next is Unit 7, which is Human Resource Management. Maslow's theory is based on, options are motivation hygiene, option B need hierarchy, option C ERG theory, or option D expectancy. So Maslow's theory is based on option B, that is need hierarchy, and इसके according Maslow ने कैसे need को set किया है, कैसे need को arrange किया है, that is सबसे पहले physiological needs, उसके बाद safety needs, then social, after that esteem, and lastly self-actualization. Next question from HRM, recruitment is, options are selection of employees, performance evaluation, process of searching and attracting candidates, or none. Correct answer है option C, that is process of searching and attracting the candidates. Which training model is learning by doing? इनमें से कौन सा ट्रेनिंग मॉडल ऐसा है जहां पर काम करते करते उसे सीखा जाता है? ऑप्शंस हैं लेक्चर, वेस्टिब्यूल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और सिमुलेशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. 360-degree appraisal collects feedback from, options are supervisors only, subordinates only, peers, subordinates, supervisors, self and customers, और ऑप्शन डी नन. सो 360-degree appraisal का मतलब होता है collecting the feedback from everyone related like your peers, subordinates, supervisors, self and customers, so that it will provide a holistic evaluation. Hawthorne experiments emphasized, options are monetary incentives, importance of social factors, scientific management, or none. So correct answer है option B, that is importance of social factors. एल्टन मायो ने हाईलाइट किया है यहाँ पर रोल ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड मोटिवेशन. So hence we can say importance of social factors is something that is emphasized very much in Hawthorne experiments. Next we have Unit 8, which is strategic management. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर. SWOT एनालिसिस में जो SWOT होता है SWOT, that stands for, ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सेल्स, वर्कफोर्स, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सिस्टम्स, वर्क, ऑपरेशंस, टारगेट, और ऑप्शन डी नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. इनमें से स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस, एंड अपॉर्चुनिटी and threat are a part of external environment. The father of strategic management is, options are Drucker, Ensoff, Fayol, or Taylor. Correct answer option B, that is Ensoff. BCG matrix classifies businesses based on, options are growth rate and market share, profitability and risk, cost and differentiation, or none. Correct answer option A, that is growth rate and market share. And classification को क्या नाम दिया जाता है? It is dogs, stars, cash cows and question mark. Horizontal integration means, options are acquisition of suppliers, competitors, distributors, or option D diversification. So horizontal integration means acquisition of competitors. That means firms at same stage of productions are combining. Vision statement is about, options are present status of the firm, future aspirations, financial performance, or annual targets. So जब हम बात करते हैं vision की, the vision statement, it is about future aspirations. So correct answer option B. Moving forward with Unit 9, that is legal aspects of business. A contract without consideration is, options are valid, void, voidable, or illegal.
Correct answer option B, that is void. A contract without consideration is a void contract, क्योंकि सभी essential elements का होना जरूरी है for a contract to be called as a valid contract, and उसमें से एक जरूरी element होता है consideration. Doctrine of indoor management protects. Options are outsiders dealing with the company, shareholders, directors, or government. Correct answer option A, doctrine of indoor management will protect, or protects, we can say, outsiders dealing with the company. Maximum number of members in a private company is 50, 100, 200 or 500. So as per Companies Act 2013, maximum number of members in a private company is option C, that is 200. LLP Act was introduced in India in, LLP stands for Limited Liability Partnership, and पिछले UGC NET के एग्जाम में, that means June 2025 में, a lot of questions came from LLP. So options हमें यहाँ पर given है 2005, 8, 10 और 13. Correct answer है option B, that is 2008. Minimum number of members required to form a public company is, options are 2, 3, 7 or 5. So again, as per Companies Act 2013, the correct answer is option C, that is 7. Last unit, unit 10, that is income tax and corporate tax planning. PAN in India stands for, options are permanent account number. I hope ये सबको ही पता होगा PAN की full form क्या होती है इंडिया में. Personal account number, permanent assessment number, professional account number. Correct answer है option A, that is permanent account number. Agricultural income in India is, options हैं fully taxable, fully exempt, partially exempt or taxed at flat 10%. Correct answer option B, that is fully exempt. Tax incidence in case of a resident individual in India is on, options हैं income earned in India only, global income, foreign income only or none. So correct answer होगा option B, which is global income. So resident and ordinarily resident taxed on worldwide income. So the person who is a resident in India will be taxed on the global income he or she is earning. मैट स्टैंड्स फॉर, सो एब्रीविएशन से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, सो डू प्रैक्टिस देम वेरी मच. मैट स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं मिनिमम असेसमेंट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैक्सिमम एडवांस टैक्स और नन. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. जीएसटी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, options are 2015, 2016, 2017 or 2018. Correct answer is option C, that is 2017. I hope you have been writing your scores down, and tell me in the comment section how much did you score in this video from this quiz. If you like the video, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow.